أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I am Mohsin Qureshi and I am going to explain the datasheet of digital electronic weight scale. Here we have manual of contact company in which there are different series available by CTN, CTT, CTH, CTL, CTF, CTS. So these company can make many scales according to their use in markets. There are available according to the different types and different sizes. So in first of all introduction we will see there are some features in this scales. First of all, it can measure in different units like gram, kilogram, carat, tola, liters. It has feature touch members keyboard. It has battery backup as if we have no power source, no electricity, it can run on battery. It has piece counting facility up to 25 different types, which means that it can measure 25 different types of pieces at once. It has a memory which can store up to 100 weights and it can also print it. It has power saving modes. It has RS232 interface, which means it can connect with any type of computer and printer. It has selectable baud rate. बाउड रेट बेसिकली ये होता है कि जो डाटा ट्रांसफ़र होता है उसकी स्पीड को हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें ये फीचर भी होता है कि आप जो डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कंप्यूटर को कर रहे हैं या प्रिंटर को कर रहे हैं या फिर वो एलसीडी में आउटपुट एज दे रहे हैं, तो उसकी जो स्पीड है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। इट हैज़ सेट पॉइंट फैसिलिटी अप टू 3 लिमिट्स। इट हैज़ ऑटो पावर ऑफ, so we can set by our own power of time, so it can shut down. It has keyboard facility. It has date and time facility. It has multiple print option with serial number, date, time, date in horizontal or vertical mode. It has automatic zero tracking. It has user selectable zero mode with net cross facility for minimum use. So here we have installation in which there are different steps given from unpacking electrical equipment, environmental equipment, startup, and how to start. So after installing it, there are different operations of the scale. First of all, we have for changing weights units, as there are different types of units which this weighting scale can support, like gram, kilogram, carat, tola, liter. So you can change the weights units by simply follow these steps. Next, we have for changing date, time, and serial number. So here we have also given some steps which we can follow to change this date, time, and serial number. So all these steps related to the format of the date, time, and serial number, as we can follow these steps to set our weight scale, date, time. Next, we have print option. In print option, we can also use this to print our document in hard form. First of all, we have four different options. First, we have single. Single means it can only print a single measuring scale which is currently placed on the pan of the weight. Next, we have STB, which means that when we put any quantity, कोई भी हम जब कोई चीज रखते हैं कोई भी मेजरिंग करने के लिए, तो जब तक वो वेट के स्केल के ऊपर स्टेबल उसकी रीडिंग नहीं हो जाती तब तक वो प्रिंट नहीं करता। जब उसकी रीडिंग स्टेबल हो जाए उसके बाद वो प्रिंट करता है। एंड देन वी हैव all means that all details shown on weight can be printed. Then we have store ED. Store ED means कि जो मेमोरी के अंदर
जितनी भी रीडिंग स्टोर हुई हुई है वो सब के सब जितनी भी डिटेल है वो सारी को प्रिंट कर देता है. Then we have also different option of PRF 1, 2, 3, 4, 5, which can print according to the only weight, and PRF2, which we have serial number and weight. So there are the different formats and details which we have made it according to the requirements. So next we have print type horizontal or vertical, where we can also print the हम जो है इसमें प्रिंट कर सकते हैं कि ये या हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में चाहिए या वर्टिकल फॉर्मेट में चाहिए, तो हम इसमें वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं. देन वी हैव टाइटल के हमारे पास तो ये भी ऑप्शंस होते हैं दैट if we if we want yes or no to enable title printing or disable the title printing. Next, we have bidirectional RS-232 interface. This is again the same thing that when we this is used to connect our weight seeing scale with computer or printer to perform different tasks. For example, in printer, we connect to perform to print it in hard copy readings, and for computer we can use it for different customization or storing different types of data. It is also given from some readings like backspace. So if we store a single blank space in computer, so it can तो ये जो है 20 हेक्साडेसिमल की जो जगह होती है वो कंप्यूटर की मेमोरी में लेता है. सी आर कार्टिज रिटर्न 0 डी जो होता है हमारे पास 13 होता है हेक्साडेसिमल में, और एल एफ 9 फीट 0 ए का मतलब होता है हेक्साडेसिमल में 10. तो ये डिफरेंट यूनिट्स होते हैं हेक्साडेसिमल बाइनरी. देन वी हैव क्लियर weights in memory. By using this test, we can clear our memory and then storing weights in memory. So these are the steps to store different weights in memory, and then recalling weights. Uh, जब हम उसको स्टोर करते हैं वेट के अंदर कोई भी वैल्यू हम स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर, तो उसको जब हमने रिकॉल करना हो यानी कि हमने उसको चेक करना हो कि हमने कौन सी वैल्यू स्टोर की है, तो उसके लिए ये सारा प्रोसेस है. And then we have auto power off. So as you know, it has a feature of auto power off. So by using all these steps, we can set the auto power off time. So then our waiting scale will be power off. And next we have piece counting mode. This is the same as I have discussed before. ये वही चीज़ है कि जो 25 जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं वो इसको एट अ वंस टाइम काउंट कर सकता है. देन पीस कैलिब्रेशन, ये भी वही इसी का सारा प्रोसेस है कि वो जो 25 जो आइटम्स को ये काउंट करता है उसकी कैलिब्रेशन उसके साइज के हिसाब से होती है और उसका वेट के हिसाब से एडजस्ट होती है. And then we have set point facility. Set point facility is basically कि जो हमारी रीडिंग शो होती है ना वेट की, उसमें जो डेसिमल आता है डेसिमल के बाद हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद हमें एक वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू चाहिए, थ्री वैल्यू चाहिए. तो ये होता है ताकि हमें एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा पता चल सके. जैसे कि अब यहाँ पे ये पॉइंट है, देन वी हैव ओनली टू डेसिमल फ्रैक्शंस. इसमें तो सिर्फ पॉइंट के बाद सिर्फ दो वैल्यू शो होगी. अगर हम इसको चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं. So this is all these steps, and this again same steps for setting the points decimal values. Here we have operating in tar zero mode. This is to operate the weight scale in the simplest form, like just if we press zero button, then it can सेट वेट टू जीरो. मतलब जब हम जीरो का बटन प्रेस करते हैं तो कोई भी रीडिंग आ रही हो, फॉर एग्जांपल एनीथिंग, कोई भी रीडिंग 1 2 3 आ रही हो वेट स्केल के ऊपर, तो वो सारी जीरो पे सेट हो जाती है. फिर कोई भी रीडिंग जो है वो लिखी हो तो जीरो आ जाती है. देन वी हैव सेटअप फंक्शंस.
ये डिफरेंट मतलब जो उसमें कमांड्स यूज होती है उसको आगे इसका फंक्शन बताया गया और उस कमांड के आगे डिस्क्रिप्शन फाइंड की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ये इस कमांड से क्या क्या काम होता है. And then this is all same functions described. At last we have set of functions in which we have different types of commands which can be used to switch between different types of setters. And at last we have the for parameters in which there are different types of parameter given and also a description and what type of function it is telling us is also given. Its cost starts around about 15,000 to onward. ये आम जो नॉर्मल जो मिलता है हमें वेट स्केल जो कमर्शियल्स में यूज़ होता है उसकी निस्बत काफ़ी महंगा है लेकिन इसमें फीचर्स भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं जैसे कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होके उसमें डाटा स्टोरेज करना या प्रिंटर से प्रिंट निकलवाना और मैन्यू में डाटा स्टोर करना. अब जो नॉर्मल हमें वेट्स के मिलते हैं मार्केट में उसमें ये सब फीचर्स नहीं होते. So that's why I prefer this type of weight scale